Today is 23rd May and starting today onwards, anyone who possesses a 2000 rupee note can either exchange or deposit that note in any of the bank branch. We are being joined by Mr. Ravi Ranjan, Bank Manager, Bank of Baroda, Worli branch, Mumbai. Thanks a lot for talking to us, sir. My first question to you is about, the branch has just opened, but in the last 1 hour, has anyone come to exchange or, deposit 2000 rupee note? No, right now no person has approached us for the exchange of the note. Okay. But later on it will happen. You're expecting people. Okay. Sir, what special arrangements you have made? RBI governor has made an appeal that enough drinking water should be made available because it's really hot. Sheds should be there. Anything on those lines, sir? So everything is available inside the branch premises. It is fully air-conditioned branch. Okay. So there is no issues for the standing in the outside of the branch. Or study facility is available in the branch. So there is no issue. Okay, but in case if the crowd increases and the bank branch couldn't occupy them, what is the special arrangement in that case, sir? No, we are make a special arrangement for 2-3 counters to cater all that. But I think we are able to manage the crowd because it's a big branch. Right. So the space is there, so we can handle it. Right. So also I saw this, form which the staff asked us to fill. So if you can tell us what exactly will a person who wants to deposit or exchange 2000 rupee notes will require in terms of first they have to fill this form and then they have to submit an ID proof? But they have to just provide some information कि what is his account number अगर हमारे साथ हैं तो whether he is going to deposit in the account or he is want to exchange. If he want to exchange, the 10 note is the limitations is there. Otherwise he can deposit in their account. But what about this form and Aadhaar card or any other ID form, sir? ID card? जो भी कस्टमर हमारे हैं जिनके अकाउंट है हमारे पास देयर इज नो नीड. तो जो हमारे नॉन कस्टमर्स आते हैं तो उनकी आइडेंटिटी के लिए हम उनके कुछ भी डिटेल्स हमें ओबीडी प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं. लेकिन जो आपके कस्टमर्स हैं आप कह रहे हैं उनको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है? एक्सचेंज के लिए जो है सिंपल इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट बट अकाउंट इज देयर तो एवरीथिंग इज विद अस. तो आप जो कह रहे हैं कि एक्सचेंज के लिए इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वो इस फॉर्म में भरनी होगी? हाँ. सर, इसमें मेरा सवाल ये कि आरबीआई गवर्नर ने दरअसल कल ही इस बात को साफ किया था कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर से हटके कुछ भी अलग से नहीं चाहिए होगा. प्रोसीजर नहीं है मैडम. बस जैसे कि चूंकि हमें रिपोर्टिंग भी करनी है तो व्हाट एवर इन्फॉर्मेशन भी है कि जितने नोट हम इतने तो इसको शाम को समराइज करने के हिसाब से हमने एक सिंपल फॉर्मेट इशू किया. बाकी इसमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन इज नॉट देयर कि आपको ये बताना है वो बताना है क्या. लेकिन करेक्ट सर, बट एक्स्ट्रा प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्म क्लियरली बोल रहा है कि ये 2000 रुपए के नोट सबमिट करने के लिए और इसमें आपको अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो सब देनी है. जो कस्टमर हमारे नहीं है उनके लिए, क्योंकि जो कस्टमर को हम नहीं जान पा रहे तो फिर हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. इसलिए हमारे जो कस्टमर है उनका तो अकाउंट है ही हमारे पास में और उसमें इजीली हो जाता है. तो जो भी नॉन बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर्स हैं वो जब आएंगे उन्हें ये फॉर्म भरना है और अपना एक आईडी प्रूफ देना है एक्सचेंज के लिए. हाँ, एक्सचेंज के लिए. Thank you so much for talking to us, sir. So this was Mr. Ravi Ranjan from Bank of Baroda branch, Worli, Mumbai. And as you heard, he said that for those people who are not Bank of Baroda customers, they will have to fill this form in order to exchange 2000 rupee note which they possess. Now it was yesterday that the RBI governor said that nothing which is additional procedure wise will be required to exchange or deposit 2000 rupee note. But as far as Bank of Baroda, this particular branch, Worli branch, Mumbai is concerned, non-Bank of Baroda people will have to fill this form to exchange their 2000 rupee notes.